So welcome to class 12. Today we are going to discuss about the new topic, that is the bank and the working of bank. So first of all, I will tell you that what is bank and what are the functions of bank and how does it works. So let us start. First of all, what is bank? So bank is a legal institutions, okay, which performs two basic functions. Bank is a legal institution which performs two basic functions, that is accepting deposit from the public and granting loan to the public. And whenever any institution, any organization performs these two basic functions, okay, then the same will be called as the bank, okay. And the second thing is that banks means basically we are talking about the commercial bank, and commercial banks is a type of bank which performs this function as well as invest the money for making profits. That is why it is called as the commercial bank, okay. So let us understand that how the commercial bank accepts deposits from the public and how it grants loan to the public and in which form, okay. So the first is accepting deposit from the public by the commercial bank by four different accounts, okay. Commercial bank can accept deposit in the form of four different accounts. First is the saving bank account, second is the current account, third is the term deposit or fixed deposit account, and fourth is the recurring account. So these are the four various accounts through which the commercial bank accepts deposits from the public, okay. Let us understand these four types of accounts in a very short detailed manner, okay. First is the saving bank account. Saving bank account is a type of account in which the people used to save their money in the bank for their daily expenditure, and for this the bank provides a minimum amount of interest rate on that saving bank account, okay. Besides this, the bank also provides the checkable facility to withdraw the money as well as to deposit the money in the bank, okay. Third thing is that there is a limitation for the deposition and withdrawal of the money in this saving bank account, okay. Second is the current account. Current account is generally maintained by the businessman for updating their current business, okay. There is no limitations on the deposition and the withdrawal of the money which is being kept in the current account. Second, there is a checkable facility available in this type of account, and the bank charges some minimum amount for their service in this type of accounts. Third is the term deposits or the fixed deposit account. Term deposit means whenever the money is being kept in the bank for a term period of say 1 year, 2 year, 3 year or more than 5 years, okay. So whenever a lump sum balance is there, okay, or whenever there is a lump sum balance arises to the customer, then he used to deposit the same money to the bank for a period of 5 years, for a period of 2 years, for a period of 4 years. This is called as a term deposit account, okay. So in between the deposition period, he has no authority to withdraw the money. If he is going to withdraw the money, then he will have to face the penalty of the bank, okay. Second, there is no checkable facility available in this type of accounts. Means flat you have to deposit, and after term period, after maturity period, whenever the maturity period will over, you can withdraw the same money, okay. This is the term deposit, and last is the recurring accounts. Recurring accounts is the part of term deposits, and when a customer wants to have his deposition just like the term deposit, but he don't have the lump sum balance, then he can also do the activity like the term deposit with the help of recurring accounts. Suppose he want to fix 1 lakh rupees in 1 year, period of 1 year, then he can do so by depositing 8,323 every month, and after the completion of 1 year
in his account there would be 1 lakh plus 6.5% interest rates. Means in recurring account and term deposit account, the customer gains the highest interest rate from the bank, while in saving bank account the customer gets maximum 4 to 5% interest rate annually. Okay, while in current account the bank do not provide any interest rate, but it charges a minimum amount to provide the service. Okay, so these are the 5 various ways through which the bank accepts deposit from the public. Now come to the next part, that how it grants loan to the public. So granting loan to the public is the essence to the bank, because we never accept deposit money for keeping themselves. We used to grant the money to the public for the motto of making profits. Okay, so he can grant loan in the form of short-term loan and long-term loan. While in short-term loan there are some other forms also. In short-term loan means whenever the loan is being provided by the bank for a period of, you can say, 1 year, it is called short-term loan. While long-term loan is a type of loan which is being provided by the commercial bank for a period of more than 1 year, 2 year, 5 year, 10 year or 20 year, in the form of education loan, in the form of car loan, in the form of housing loan. All this comes under this long-term loan. While in short-term loan, you can say like the demand loans, okay, asset loans, term loans, these are called as short-term loans. Whenever demanded, it can be deposited by the customer. So these are the 2 various ways through which the commercial bank grants loans to the public and accept deposit from the public. Now come to the rates. At which rate the commercial bank grants loan and which rate accept deposit. Okay. Now come to the next part. There are 2 different rates. First is the borrowing rate. And second is the lending rate. What is borrowing rate? Borrowing rate is the rate at which commercial bank accepts deposit from the public. Okay, and lending rate is the rate at which the commercial bank lends money to the public. Getting me? So it can be 4 to 15%. It can be 4 to 7%. Okay. Generally, the rates of the private banks are more, okay, while the rates of the public banks are very less. You can say 4 to 5%, while the rates of the private banks is more than 4%. You can say more than 4%. Okay, lending rates can be 4%, like KCC, as well as education loan, home loan. All this comes under in these rates. Okay. So lending rate is the rate at which the commercial bank grants loan to the public, and borrowing rate is the rate at which the commercial bank accepts deposit from the public. Now come to the other types of rates. Okay. Hereupon we will discuss some other types of rates like bank rate, repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR. Okay. Now we will discuss about these 5 different types of rates. Okay. So what is bank rate? Bank rate is the rate at which the commercial bank takes loan from the Reserve Bank of India for a long period of time. Or bank rate is the rate at which Reserve Bank of India provides loan to the commercial bank for long period of time. At present it is 6%. Repo rate, it is just opposite to the bank rate. Bank rate, repo rate. Repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India provides loan to the commercial bank for short period of time, and this short period of time can be 1 day, 2 day, 5 day, 6 day, 1 week, or maximum it would be 90 days. Okay.
Third is the reverse repo rate. It is the reverse repo rate is the reciprocal of repo rate. Okay. Reverse repo rate means whenever the rate is reversed. So when the commercial bank provides loan to the Reserve Bank of India for a period of short time, that is called as reverse repo rate. Okay. Next, SLR. It is called as the statutory liquidity ratio, and CRR is called as the cash reserve ratio. Okay. So what is statutory liquidity ratio? It can be 15 to 40%, and CRR can be 4 to 15%. Okay. Statutory liquidity ratio means it is a ratio which is kept by every commercial bank for themselves. Okay, whatever the total deposits and term deposits he has, out of that he has to keep money up to 15 to 40% for themselves. And second, CRR means cash reserve ratio, means every commercial bank has to keep with the name of RBI. Okay, that is called as CRR, and it can be 4 to 15%. Currently, the SLR is 19% and CRR is approximately 4%. Okay. What is this? Let us understand with a simple example. Okay. Besides this, whatever I have told you, these 5 types of rates behaves as a tools to correct or check the inflation rate in the economy. यानी कि जो 5 रेट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये 5 रेट्स आपको एक तरह से टूल्स के रूप में भी इकोनॉमी में यूज होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो इस डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये आपके 5 अलग अलग टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट by taking a example. Okay, we will understand the banking or the working of the bank. How does the bank works? Suppose करो ये आपका एक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये आपका एक कॉमर्शियल बैंक है एंड ये आपका एक बहुत बड़ा बैंक है, उसको बोलते हैं RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा कनेक्शन है इन दोनों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और कॉमर्शियल बैंक में। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ एपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री विच इज यूज्ड टू मॉनिटर कंट्रोल फंक्शंस द मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका सबसे बड़ा बैंक है, जो कंट्रोल करता है गवर्नमेंट्स को, कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को, कंट्रोल करता है मॉनेटरी फंक्शंस को ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और फिलहाल इसके जो गवर्नर हैं आज डेट में वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशन है इनमें और इनमें। अगर ये दादा है तो ये इसका क्या है, ये इसका बेटा नहीं, बेटे का बेटा है। ठीक है, यानी कि ग्रैंडसन, ये इसका ग्रैंडसन है। ठीक है, ये अगर इसके ग्रैंडफादर है, ये इसके ग्रैंडसन है। अब देखते हैं इसमें क्या कनेक्शन है। सपोज करो कि कोई राम नाम का लड़का, ठीक है, उसने 1000 रुपए इस बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, अब बैंक चूंकि क्या करता है, बैंक कौन है, बैंक वही है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट करता है लोन टू द पब्लिक। ठीक है, इसने तुरंत वो पैसा क्या कर दिया, किसी श्याम नाम के लड़के को या किसी श्याम नाम के कस्टमर को 1000 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, राम ने पैसे दिए किस रेट पे, बोरोइंग रेट पे बैंक को। ठीक है, जो 4 to 7% हो सकता है। श्याम को पैसे लेंडिंग रेट पे दिए कमर्शियल बैंक में, जो 4 to 15% हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड, व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, दैट इज lending minus borrowing. Lending minus borrowing is equal to spread, and this profits is used by the bank for providing the salaries to the staff,
the stationery as well as all the miscellaneous expenditure by the bank. Okay, तो ये आपने समझ लिया कि इसका प्रॉफिट बैंक का होता है। बैंक के पास जो प्रॉफिट्स होता है उसी प्रॉफिट्स में से वो अपने सारे स्टाफ की सैलरी देता है और वो सारे के सारे मिसलेनियस जो उसके स्टेशनरी के खर्चे होते हैं यहीं से निकालता है। ठीक है, अब सपोज करिए कि राम ने 1000 रुपये बैंक को दिया और उसने शाम को पैसे ट्रांसफर कर दिया। अब अगले दिन फिर से राम साहब पहुँच गए बैंक में और उन्होंने कहा मेरा 1000 दो। ठीक है, अब उन्होंने जब 1000 की डिमांडिंग कर दी तो बैंक के पास, इस कमर्शियल बैंक के पास क्या कोई जरिया है, कोई पैसा है जिससे वो इस राम को दोबारा वापस कर सके? तो आंसर होगा नो, बिकॉज उन्होंने जो पैसा राम का था उसको किसको दे दिया? शाम को दे दिया। अब क्या करेगा? अब कमर्शियल बैंक के पास सिर्फ एक ही चारा है, एक ही उपाय है कि वो अपने दादाजी से संपर्क करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क करे। इस कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि kindly give me 1000 so that I can pay to Ram, okay, because he has given me 1000 as a saving balance. Okay, now the RBI has, what are the options? RBI has what options to do? RBI के पास क्या ऑप्शन है कि ये काम को सेटल करें? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़े या फिर किसी दूसरे से पैसे मांगो। आप अपने पास रिजर्व बनाओ ना, आप अपने पास रिजर्व बनाओ और उस रिजर्व को यूज करो। ठीक है, फिलहाल मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगले टर्म से याद रखना कि तुमको एक रिजर्व बना के चलना होगा। ठीक है, इन्होंने पैसे इनको दे दिया, इन्होंने राम साहब को पैसे दे दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि आप दो तरह का रिजर्व बनाओ, एक रिजर्व SLR के रूप में बनाओ और एक रिजर्व CRR के रूप में बनाओ। यानी SLR मतलब कि सपोज करो कि आपके पास जो कस्टमर पैसे जमा कर रहे हैं उसमें से आप वॉचफुल रहो, देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जो अगले समय या अगले कुछ महीनों में आपके पास पैसे लेने के लिए पहुंच सकते हैं। अब सपोज करो कि ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि जितने लोग पैसा एक साथ जमा किए हैं फिर अगले रोज सभी लोग पैसे जमा किया हुआ निकालने के लिए पहुंच जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया कि आप देखिए कि उनका परसेंटेज कितना है। तो मैक्सिमम जो परसेंटेज हो सकता है वो 20 to 40% हो सकता है जो पैसे लोग निकालने के लिए पहुंचते हैं बैंक में। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इतने का रिजर्व बना लो। ठीक है, आप जो है एक SLR बनाओ और एक CRR बनाओ। पहले आप एक रिजर्व मेरे नाम पर बनाओ और एक रिजर्व अपने नाम पर बनाओ, और जो भी लोग आपके पास पहुंचते हैं पैसा लेने के लिए आप इस रिजर्व का इस्तेमाल करो और उनको पैसे वापस करो। इस तरह से आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपका स्मूथली जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो क्या हो जाएंगे, फंक्शंस करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये RBI के हेल्प से इन्होंने CRR और SLR बनाना शुरू कर दिया। तो ये CRR और SLR क्या है? CRR और SLR एक तरह से यूँ कह लीजिए कि मनी क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए 20% आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अगर किसी ने 1000 रुपये आपको दिया है और उसमें से 20% आपने रिजर्व बना लिया, तभी आपके पास कितना बचता है? 80% बचता है, जिसको आप आसानी से लेंड कर सकते हैं और उसको मनी को सर्कुलेट करा करके उससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 800 को आप फिर से अगर सर्कुलेट करते हैं तो फिर से वो घूम फिर करके कहाँ आएगा? आपके पास ही आएगा। ठीक है, फिर उसका 20% आप रख लीजिए, 20% रख लीजिए, फिर वो घूम फिर करके आपके पास बैंक में आएगा, फिर दोबारा जब आएगा। ठीक है, सपोज करिए कि इसका आपने 160 रख दिया, तब कितना बचेगा आपके पास? 640 बचेगा। ठीक है, 640 को फिर आपने सर्कुलेट करा दिया, फिर इसको लेके कर दिया, फिर इसका 20% रख दिया, फिर आपके पास आ जाएगा 512। इस तरह से आपका जो मनी क्रिएशन है इसमें आपको ये पैसा क्या करेगा? हेल्प करता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको जानना है कि आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हो गया है तो आप एक समय देखेंगे कि आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा? लगभग 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? अब इसे मनी क्रिएशन यानी कि MM, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर को से इसको हम संबोधित करते हैं मनी क्रिएशन को। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन
20% को 0.20 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट्स, यानी कि अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 है और 5 टाइम्स आपका टोटल डिपॉजिट्स दिखा रहा है, यानी कि कितना आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा ये हो जाएगा 1000 इंटू 5 दैट इज 5000, यानी कि 5000 आप मनी क्रिएट कर सकते हैं इस नॉर्मल 1000 से। ठीक है, इस तरह से मनी क्रिएशन भी होता रहता है और आसानी से बैंक ऑपरेट करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उधार लेता है तो बैंक रेट पे लेता है। ठीक है, जब छोटे समय के लिए लेता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, तो रेपो रेट पे लेता है पैसा। जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे उधार लेता है तो वो रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। ठीक है, SLR और CRR को अभी मैंने आपको बताया, SLR वो रेट होता है या वो रेशियो होता है जो हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है ताकि वो बोरोइंग्स को कंट्रोल कर सके, और CRR वो रेट होता है या वो रेशियो होता है जो टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रखता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम होगा, और इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने बोरोइंग्स और अपने लेंडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट मनी क्रिएशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, हम इससे मनी क्रिएशन में हेल्प ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा मनी क्रिएट कर सकते हैं और मनी सप्लाई हम इकोनॉमी में देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंक एंड द वर्किंग ऑफ बैंक. I hope you all have understood the banks and how does it work in the economy, and if you have any doubts, any problems, okay, try to comment in the comment box. Thank you.